Good morning and welcome to the Advanced Entrepreneurship class. It's an elective class for the sixth semester, session 25-26. This is the tutorial class on Tuesday, today, April 7th at 9 o'clock in the morning. And we are going to talk about finding and identifying an unmet need. And we'll do the class interaction. In the last class, we did go through identifying an unmet need. And we identified some of the needs there. So we will continue that exercise today also. Instructors, we have Professor Suresh Roy, a serial entrepreneur and expert in the manufacturing, product transfer, new product introduction, uh, supply chain. He's expert in all of those. And then I'm Ramesh Yadav. I'm also a serial entrepreneur and have been instructor, adjunct professor at JUT and BIT Sindhi for last 9 years. So these are the Zoom classes, and there are some things which I want you to follow. So especially in the Zoom call. So welcome to the Advanced Entrepreneurship Zoom call. To ensure that we have a productive and focused session, please follow these simple guidelines. Because in this class, as you can see, there might be over 100 students, 100 participants. And even if one participant creates a noise, it's going to disturb those 100 participants. So we don't want to do that. And so please, to ensure the productivity and focus session, please follow these simple rules and guidelines. Your microphone is muted by default. Please stay on mute when not speaking to minimize the background noise. So stay on the mute. You have a raise hand feature. If you have a question or comment, please use the raise hand reaction. And the administrator will actually call upon you to unmute. And so then we can keep the discussion orderly. We have an active chat, very active chat. So feel free to post your questions or insights in the chat box at any time. And we will dedicate moments to address those. It's my request that all of you turn your video on so that I can see all of you. And also, I have my video on too. Professor Roy has his video on too. So that will be a better interaction, you will know. But most importantly, please stay present. So to get the most out of this class, most out of this 2 hours, next 2 hours, let us try to minimize the distraction. And don't do any multitasking. Just let us focus in this tutorial class. So with that, thank you so much. This course is Advanced Entrepreneurship. It is a 5-unit course, and 3 units are dedicated to the lecture, and 2 units are dedicated to the tutorial. The lectures are on every Saturday, 9 o'clock in the morning to 11 o'clock IST, and the tutorial are on every Tuesday, 9 o'clock in the morning to 11 o'clock in the morning. And then we have we have L item number 3, which is a 1-hour session with the mentor. Every team pick up their own time and mutually agreeable between the mentor and the team members. So you will create a team, and we can
based on, let's see, how many projects we have, how many ideas we have, we'll create that many teams. So the ideal would be six students per team. That will be the ideal. And what we will do is we will assign a mentor for each one of those team. Okay. We'll have two midterm exam and a final exam, and you will have a BMC presentation. BMC stands for Business Model Canvas. This you, of course, since you have gone through and attended the first Introduction to Entrepreneurship class, so you must be very familiar with that. So in the last class, you identified the following unmet need. Water level sensor in the water tank. Sumit pointed that out. Lack of short distance transport service in the rural area. Swati Yadav pointed that out. Citizen not following citizen not following their civic duties, not following the rules. How to handle that? And Shivam Raj is pointed that out. Thank you. And then हॉस्टल की कैंटीन का खाना बहुत ही बेकार होता है. Shalini Pandey addressed that. Then we have a campus placement at engineering college by the industry. So Kishan pointed out that why doesn't the industry come to your institute? So that is also unmet need which has been identified. Then sunlight for the growth of the society. Nisha pointed that out very well. So sunlight is so important. And then affordability of medicine during the war. Saurabh pointed that out, that the medicine that is going so expensive because of this war. So this is what we had done in the last, and thank you so much. So today, what I'm going to do is I'm going to go through the some of the slides for the how to find the unmet need, and then we will continue with our finding out more projects, more. I expect all of you to come and be proactive and be interactive and identify more ideas, come up with more ideas what you want to do. What will be your startup? What is that unmet need you think you want to work on? So objective of a startup is to find a business model which is repeatable, scalable, and profitable. A business model, repeatable, scalable, and profitable. This is the fundamental of a startup. Now, so finding and identifying an unmet need. Everything is customer focus. Whose unmet need we are looking for? We are looking for the unmet need of a customer. So identifying a genuine market need is the foundation of the lean startup methodology. Lean startup. ये जो term है lean startup, this is used everywhere. And when you go to the interview after you have graduated, you learn about this lean startup and you talk about this lean startup methodology. Lean startup का मतलब हुआ agile. Agile का मतलब हुआ fast. बहुत जल्दी उसको करना, और वेस्टेज भी बहुत कम हो रही है. So those are the two things. We'll talk more about it in the coming classes. And then successful entrepreneur or intrapreneur focus on problem discovery. So you will also find out the problem. So you have a need, and then you have to convert that need which you have found out, you will convert that to the problem. So successful entrepreneurs and intrapreneurs focus on problem discovery.
to ensure they are building something which people actually want. Very important. Building something which people actually want. What does that mean? That means when you build something and people want it, people will pay, will compensate you for that. So it is very important. Now, just again, remain customer focus. Everything is customer focus. So identifying a pain point is the foundation of the lean startup methodology. Need is often a gap between a customer's current state and the desired state. Right? That's what it is. Identify a pain point is the foundation of the lean startup technology. And a need, what is a need? Need is often a gap between a customer's current state and desired state. That means need क्या है? नीड वो है जो कि कस्टमर क्या अचीव करना चाहता है। उसकी अभी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? उसकी प्रॉब्लम हो सकती है कि वो इनएफिशिएंसी, उसकी प्रॉब्लम हो सकती है कि उसका मटेरियल कॉस्ट या असेंबली कॉस्ट या ऑल दोस कॉस्ट आर टू हाई, और उसका हो सकता है कि सम ऑफ द मटेरियल, सम ऑफ द सर्विस is not available where that person is. So all these things are important. So the customer may be unhappy or may have a need because उसको efficiency बढ़ानी है, उसको cost कम करनी है, और उसको जो material चाहिए वो उसको so that he can buy that material. So how do you find that? Observe and empathy. In the last class, we talked about empathy. That means ये जानना कस्टमर के साथ जानना, कस्टमर के साथ महसूस करना कि कस्टमर को क्या तकलीफ है, उसके तकलीफ को समझना, उसको तकलीफ को ऐसे समझना जैसे वो हम सबकी अपनी तकलीफ हो। तभी ना हम समझ सकेंगे कि प्रॉब्लम क्या है कस्टमर की। सो प्रॉब्लम जो है, अंडरस्टैंड कस्टमर प्रॉब्लम, बहुत जरूरी है समझना। तो लिसन, ध्यान देना। जब कस्टमर से सवाल आप पूछते हैं तो आप सुनिए, डोंट इंटरप्ट द कस्टमर, कीप ऑन लिसनिंग टू द कस्टमर, कीप ऑन आस्किंग दोज क्वेश्चंस टू द कस्टमर, and customer will keep on saying that more you listen, more customer will talk to you. And then work around. तो अभी कस्टमर कैसे काम कर रहा है, कस्टमर कौन सा प्रोसेस यूज कर रहा है, क्या उस प्रोसेस को ठीक से यूज कर रहा है, और कस्टमर कौन से टूल्स यूज कर रहा है। ये तो जब आप वर्क अराउंड देखेंगे, जब जाएंगे देखेंगे तो कस्टमर क्या कर रहा है, यू विल नोट दैट डाउन। एंड देन कंप्लेन्स, लिसन टू द कंप्लेन्स। कंप्लेन्स है ये बहुत महंगा है, बहुत डिफिकल्ट है असेंबली करना, इसको बहुत ज्यादा इसको मूव करना, इतना भारी सामान है, इसको मूव करने में बहुत तकलीफ होती है। ऑल दोज थिंग्स आर देयर। सो लेकिन जस्ट लिसन टू द कंप्लेन, एंड बट डू नॉट गिव एनी सजेशन और सोल्यूशन। मत दीजिए अभी, बिकॉज यू आर देयर टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन कि कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर की तकलीफ क्या है, कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। There's a term called Gamba walks. Now, I would like you to go and just do a quick go to the chat GPT and just ask what is Gamba walks. I'll give you 2 minutes to do that actually. So go ahead on your smartphone or on your iPad, go to the chat GPT and ask the question, what is Gamba walks? Okay, so Gamba walks, ये term कहाँ से आई? You can put in the chat if you have that answer.
कहां से टर्म आई? गैम्बा इज अ जापानीज वर्ड. गैम्बा का मतलब होता है लोकेशन. गैम्बा का मतलब तो जब वो फैक्ट्री जैसे अगर है तो गैम्बा गैम्बा का मतलब वो फैक्ट्री कहां पर है. तो गैम्बा वॉक्स मीन्स विजिट टू द फैक्ट्री. कस्टमर की प्रॉब्लम है उस फैक्ट्री में, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कैसी क्या प्रॉब्लम है? यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू विजिट. Right? You have to, that's where you will talk to the customer. That's where you do the workaround. That's why you will hear about the complaint. So, Gamba walk, visit to the location. This was actually uh, done by Toyota. They are the one who first started this term, and they started working on, and so it has been adopted by the industry. Gamba walk has been adopted by everywhere, actually. Okay, so and it is the key. That means if you want to find a problem, if you want to identify a problem, you have to go and uh, look at the site, and at the site, when you talk to the worker, when you talk to the people around, and you watch and you see and you hear, then you will get to know a little bit more about that problem. Now you have observed it. You have observed and you have empathized with the customer. So you are saying, okay, customer क्या करना चाहता है? What customer is trying to get done? और ये जानिए कि वो कस्टमर को उसको काम करने में क्या तकलीफ हो रही है. वो क्यों नहीं कर पा रहा है जो काम जो चाहता है उस तरह से क्यों नहीं कर पा रहा है. उसको क्या तकलीफ हो रही है. व्हाट इज द पेन दैट कस्टमर इज हैविंग. Maybe it is too expensive, maybe it is too long, maybe it is inefficient. Whatever that is, we just talked about it. So then, and the third is gain. What value customer will get with the offered proposed proposition जो कि आप with converging technology. So once you are thinking about, okay, you know what customer wants, उसको क्या रिपेयर करना है और what is customer's desire is, and then you try to find out कि कस्टमर के लिए वो वैल्यू क्या है. अगर उसका सॉल्यूशन आप देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या है. उसकी वैल्यू 100 रुपए है, 1000 रुपए है, 50,000 रुपए है. दैट्स व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट. इसीलिए व्हाट वैल्यू कस्टमर विल गेट. ओके. एंड दैट इज द गेन विच कस्टमर विल गेट. सो अगेन कस्टमर फोकस. So now you have determined, you have solved the problem. So you come up with a minimum viable product. MVP, minimum viable product. So create what is minimum viable product? What does MVP stand for? Very, very important question. Does MVP, minimum viable product, it is not the most valuable player. It's not. It is a minimum viable product. So create the simplest version of a solution to see if customer engages with it. तो आपने बनाया उसको मिनिमम उसमें ताकि कस्टमर का काम हो जाए उससे. और अब कस्टमर को देखिए और कस्टमर क्या खुश है उससे. या कस्टमर आपको कहेगा कि ओ ये तो बहुत अच्छा है, इसमें अगर आप ये थोड़ा ऐड कर दें या थोड़ी सी इसकी एफिशिएंसी बढ़ा दें या स्पीड बढ़ा दें या इसका वेट थोड़ा कम कर दें. वट एवर कस्टमर सेज यू काइंड ऑफ लिसन टू दैट एंड यू पिवट. पिवट का मतलब हुआ चेंज, बदल दो. जो भी कस्टमर ने कहा है यू पिवट एंड मेक चेंजेस टू एड्रेस कस्टमर्स नीड. Once you have
फाउंड आउट व्हाट कस्टमर वांट्स, यू पिवट, एंड आपने ऑलरेडी उनको मिनिमम वायबल प्रोडक्ट दे दिया है, दैट इज अ प्रोटोटाइप काइंड ऑफ थिंग, वो दे दिया आपने उसको प्रोटोटाइप। अब वो प्रोटोटाइप देख के आपको थोड़ा सा बोला ये चेंज कर दो, आप उसको चेंज करते हैं, एंड देन यू tell the customer that show it to that, and customer say, you you engineers are very smart. We are, yes, that solved my problem, and I'm going to give you a place and order. और जब upon customers acceptance, what you have achieved is the product market fit. दैट मीन्स जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, मार्केट को उसकी जरूरत है। दैट्स व्हाट दैट्स व्हाट यू अचीव। मार्केट में प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो उसके आप कैसे टेस्ट करते हैं कि वो प्रोडक्ट ठीक है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है वो प्रोडक्ट। तो इसके देर आर 5 फिल्टर्स टू मार्केट वैलिडेशन। मार्केट वैलिडेशन को कहते हैं बाजार सत्यापन। 5 फिल्टर है इसके। पहला फिल्टर है अनमेट नीड। पहला फिल्टर है अनमेट नीड। दूसरा फिल्टर अनमेट नीड मतलब वो ऐसी कौन सी चीज है जो कि कस्टमर की नीड है लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। और दूसरा देखते हैं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये नीड जो है कितने लोगों को चाहिए, ये नीड कितने लोगों को के पास इस चीज की कमी है। और फिर उस अगर मैं बना दूं, सॉल्यूशन मैंने बना दिया, तो फिर कैसे, कंपटीशन भी तो बहुत बना रहा है, फिर कंपटीशन तो बैठा हुआ नहीं है, कंपटीशन भी उसमें काम करने की कोशिश कर रहा है। तो कंपटीशन मेरे प्रोडक्ट में, आपके प्रोडक्ट में ऐसी कौन सी चीज है जो कि आप हमेशा यू आर अहेड ऑफ द कंपटीशन, कंपटीशन से आप आगे रहें, सस्टेनेबल कंपेरेटिव पोजीशन हमेशा आपकी रहे, आपकी प्रतिस्पर्धात्मक हो और हमेशा आप आगे रहें, है। और फिर उसके बाद अगला है कि स्केलेबल बिजनेस। तो आप कैसे करेंगे, कि कैसे इसको बनाएंगे ताकि आप बिना कुछ ज्यादा खर्च किए हुए आप प्रोडक्शन बहुत बढ़ा सकें, बिना ज्यादा कुछ खर्च किए हुए प्रोडक्शन बढ़ा दें। हाँ, दाम तो बढ़ेगा किसका, किसका कि अगर अगर उसमें रॉ मटेरियल है, ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा दे तो नेचुरली रॉ मटेरियल का तो कॉस्ट होगा ही, बट दैट्स ऑल इट इज। लेबर का थोड़ा कॉस्ट होगा, बट इट वोंट बी बिग, क्योंकि डिजाइन तो अब करने की जरूरत नहीं है, डिजाइन ऑलरेडी इज डन। प्रोसेस और करने की जरूरत नहीं है, इट हैज डेवलप्ड। And also the your building, manufacturing building and all of that are already there. So that's called the how you are able to scalable the product. और नेक्स्ट है जो फिफ्थ है कि why us and why now, हम क्यों और अभी हम लोग क्यों। इन सब चीजों का अगर आप जब दे देते हैं 5 फिल्टर, तो दैट टेल्स कि आपका मार्केट वैलिडेशन, यू आर प्रोडक्ट मार्केट, जैसे हम लोग प्रोडक्ट मार्केट फिट बतलाए पहले, तो इसका मतलब आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया। दैट्स व्हाट इट मींस। क्यों? सो पहला फिल्टर है अनमेट नीड, अपरिपूरित जरूरत। हु हैज, कौन है जिसके की हेयर ऑन द फायर है, मतलब किसको चाहिए, बहुत तत्परता, जल्दबाजी है, मेरे को ये सामान अभी चाहिए। ऐसा कौन सा है, कौन सा ऐसा कस्टमर है, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट। कौन सा ऐसा सेगमेंट है, कस्टमर सेगमेंट है जिसको कि ये चाहिए। एब्सोल्युटली दे हैव टू हैव अ प्रोडक्ट। और उसके उसकी इन एडिशन टू दैट, हु एल्स नीड दैट प्रोडक्ट। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट अनमेट नीड, जो कि एकदम अभी करना है,
अब जैसे अब जैसे एक आइडिया जो था कि अ, कि स्मॉल डिस्टेंस रूरल एरिया में वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। और कोई अगर वहां खड़ा हुआ है बेचारा तो धूप में एकदम धूप में गर्मी में इतना तकलीफ से खड़ा हुआ है, बारिश हो रही तो बारिश में खड़ा हुआ है, और ट्रांसपोर्टेशन वो नहीं आ रहा है। सो दैट इज काइंड ऑफ अ हियर ऑन द फायर। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड दैट आउट। अनमेट नीड है, अनमेट नीड। फिर उसके बाद दूसरा है कि अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। देख रहे हैं ये, ही स्टार्टेड, यू स्टार्टेड डूइंग दैट। ये जो एंटरप्रेन्योर इंट्राप्रेन्योर है, बोले ठीक है, मैं आई वांट टू डू समथिंग, ये अपॉर्चुनिटी है, कितनी बड़ी है, कितना बड़ा मेरे को हीरा मिलने वाला है इस अपॉर्चुनिटी से। क्या ये बड़ा होगा? क्या मैं इतनी मेहनत जो कर रहा हूं उसमें सफल हो पाऊंगा? सो दैट्स व्हाट, कितनी बड़ी, दिस इज द सेकंड फिल्टर। और कितनी मार्केट कितनी बड़ी है। सो ये जो टर्म्स हैं, टैम, टोटल अवेलेबल मार्केट, मतलब पूरी दुनिया में जो अवेलेबल मार्केट है इतनी है। और दूसरा है सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट, उसको बोलते हैं सैम। ओ, कितनी, वो कौन सी मार्केट जहां की आप उसको सर्विस दे पाते, वो सर्विस आप दे पाते हैं या वो सर्विस दी जा रही है। और तीसरा है टारगेट मार्केट, आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है, दैट यू डिफाइन, यू डिटरमिन कि हमारी, मेरे प्रोडक्ट की वो टारगेट मार्केट कौन सी है। और फिर उसके बाद इनिशियल टारगेट मार्केट वो कौन सी, क्योंकि आपको स्टार्ट तो कहीं करना ही है। पूरी दुनिया में तो आप फैल नहीं सकते हैं, बल्कि भारतवर्ष में भी, पूरे भारतवर्ष में तो आप नहीं फैल सकते हैं। आप स्टार्ट करेंगे अपने शहर से, जहां आपकी फैक्ट्री है। आप शहर से आप फिर और थोड़ा बढ़ेंगे, फिर अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, फिर अपने प्रांत में जाएंगे, फिर उसके बाद पूरे और प्रांतों में जाएंगे, और फिर उसके बाद पूरे भारत में जाएंगे, राइट। और फिर भारत में जाने के बाद आप दूसरे कंट्रीज में जाएंगे, और इसी तरह यू गो फ्रॉम इनिशियल आईटीएम, इनिशियल टारगेट मार्केट, टू टारगेट मार्केट, टू सर्विसेबल, एंड दैट्स हाउ यू विल एक्सपैंड। That's what you will expand. So, the total available market, serviceable available market, your projected share market, ये डेटा आपको करना पड़ेगा। और कहाँ से मिलेगा? ये क्या होता है कि ये जो बड़े 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 एनालिटिक कंपनीज हैं सब, आपके प्रोडक्ट जो भी है उसके कितनी डिमांड है, कहाँ डिमांड है, ये सब किसी ने रिसर्च करके बना रखा है। तो गवर्नमेंट के पास वो डेटा है, एंड यू कैन गेट दैट डेटा। प्रॉक्सी मॉडलिंग, प्रॉक्सी मॉडलिंग का मतलब है कि अगर कोई, जैसे आप जिस मार्केट में, जिस जिस एरिया में, जिस सेगमेंट में है, अगर तो उसी प्रोडक्ट सेगमेंट में डिमांड कितनी है, तो उसी से आप कॉपी कर सकते। सो दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सी, प्रॉक्सी मॉडलिंग उसको कहते हैं। और फिर देन रेवेन्यू फोरकास्टिंग, ये एम्पेरिकल डेटा से कर सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे मैं इतना प्रोड्यूस करूंगा, इतना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूंगा, और इतने वॉल्यूम में बनाऊंगा, उसका दाम इतना होगा, इतने में मैं बेचूंगा, इतना मेरा उसमें प्रॉफिट है हर प्रोडक्ट में। सो दैट्स हाउ यू काइंड ऑफ गो थ्रू दैट। बट when you're starting, you don't have all that, you don't have your numbers, but there are empirical data जो कि आप बनाने की, you can get that, and all their advisors, their research, where all this empirical data you can get that. We'll talk more in the class more about this. So again, TAM, SAM, initial target segment, and base camp.
That's what it is. That's right. Base camp is where you are starting. So initial target market is a base camp. दिस सेड कि आपका प्रोडक्ट कहां पे जाएगा, मार्केट अपॉर्चुनिटी कहां पर है आपके प्रोडक्ट के लिए। क्या वो निच मार्केट है, क्या वो सेगमेंटेड मार्केट है, क्या वो एग्जिस्टिंग मार्केट है, क्या वो ये नई मार्केट है। तो जैसे नई मार्केट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट्स अ न्यू मार्केट दैट इज जस्ट स्टार्टेड, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी लुक एट द लुक एट द एग्जिस्टिंग मार्केट। कोई जो है, अगर जैसे टेलीविजन, टेलीविजन की बहुत बड़ी मार्केट है, but there are a lot of customers, lot of manufacturers also who are making television. That's a very difficult market, right? That's a very difficult market. However, you can say there could be a niche market. निच मार्केट है कि आपका जो टेलीविजन है, बट इट इज अ स्पेशल एप्लीकेशन टेलीविजन, सिर्फ स्कूल के लिए वो टेलीविजन है, सिर्फ डेस्कटॉप के लिए वो टेलीविजन है। So there is a special niche market. We'll talk more about it in the coming classes about it. But this is just the introduction I want to do today. और तीसरा फिल्टर है कि आपने प्रोडक्ट तो बना दिया, मार्केट में चले गए, हाउ यू आर गोइंग टू कीप ऑन योर एडवांटेज, कि हमेशा आप आगे ही रहें कस्टमर से। how what you will do, so what will have, how would you have sustainable comparative position, कैसे करेंगे, राइट। सो आपका अगर अपना आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, दैट में दैट में कीप यू ऑलवेज अहेड। योर एक्सपर्टीज, यू हैव एक्सपर्टीज, आप डिज़ाइन एक्सपर्टीज हैं, जो कि दे कीप ऑन ब्रिंगिंग आउट द डिज़ाइन वेयर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट गोज लो और द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट गोज हाई, right? That's it. So what you do, how you do that, because you have to remain competitive. You have to be ahead of the competition, because competition is not sitting down. Competition बैठा नहीं है, वो एकदम आग पे पीछे पीछे दौड़ रहा है, आपके साथ साथ दौड़ रहा है। आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन कंपटीशन आपके साथ साथ दौड़ रहा है। तो उसीलिए बी डिफरेंट, सबसे अलग बनाओ, बेटर इसे बेहतर बनाओ, फास्टर इसे तेज बनाओ, और कॉस्ट इफेक्टिव बनाओ। दैट्स हाउ यू रिमेन डिफरेंट। एंड और फिर आपको ये बतलाना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट है वो क्यों डिफरेंशिएटेड पोजीशन, क्यों आपका प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाई योर प्रोडक्ट इज बेटर देन द अदर। So these kind of things we'll talk more later on as the time goes. तो मैंने क्या किया है कि ये हिंदी में भी किया है, ताकि आप सबके जो इंग्लिश में आप देखिए और हिंदी में भी देखिए, ताकि आप कंपेयर कर सकें, जिसमें आपको अच्छा लगे उसी में याद कीजिए। और फोर्थ फिल्टर है कि आप स्केलेबल, क्या आपका प्रोडक्ट स्केलेबल है। स्केलेबल मतलब आप और ज्यादा बेच सकते हैं, आप और ज्यादा बना सकते हैं बिना ज्यादा खर्च किए हुए, because you have designed it in such a way. Remember, we talked about a startup. A startup it develops a business model which is repeatable, scalable, and profitable. Yeah. So minimal customization for the other market segment. And can you sell more with the minimum additional resources? Can you manufacture more with the additional minimal resources? And the last filter जो है वो है कि जो टीम जो है, कि क्यों या वाई अस, हम ही लोग क्यों कर रहे हैं और क्यों अभी कर रहे हैं। वेल हम लोग अभी इसलिए कर रहे हैं कि हमारी टीम ने मिलके
they have found out the need, and they have developed the product, and they have a customer, they have a product market fit. That's why we are there. We are all in the research. We have the domain knowledge. All of our scientists, all of our founders and co-founders and key employees, they have the domain knowledge. That's why we want to do this. Okay? So I went through very quickly, but because I wanted to go through this and just to give you a feel for it. With the time, we'll talk more about this. And I want you to go and do the research. ये सब जितने भी टर्म्स हैं ना, आप जाके इसको चैट जीपीटी में जाके आप उसको उसको देखिए, उन टर्म्स को देखिए, एंड यू विल बी एबल टू लर्न लॉट मोर अबाउट दिस, and you will know much, even you will know much more than what I know actually. It's all up to you how much you want to do. Okay. So I come back where I started earlier. How will I benefit by taking this course? ये सवाल आपका है. How will I benefit? मेरे को क्या benefit होगा इस course को लेने से? How it will help me build a successful professional career. Right? और देखिए, you have seen the first effect, जो कि हम लोगों ने जो brainstorming किया, and in the interaction where we saw that 7 students came up and said they talked about the unmet need. And I want each and every one of you to come up with an unmet need. And so on Tuesday, when we have this, we'll discuss, we'll interact, and we'll find out. We'll try to address more of your questions, and I'm sure you are bubbling with energy with your idea of an unmet need. You are going to become master critical thinker. You are going to do that because you will be navigating the real world challenge of launching and scaling a business. That's what you will do. That's what you will learn from this. जितने भी जो कैंपस प्लेसमेंट जो आते हैं ना, they look for the students who have the mindset of job creation. That's what they look for. And this course is a job creation course. Think creatively, develop mindset that turns obstacle into opportunity. कोई भी कठिन काम आए, that is an opportunity. Take that as an opportunity. Don't give up. Don't just pass by. You have to use that. So think creatively, and then thrive anywhere. So you will gain the tools. Critical thinking. You will learn. You will learn the presentation skills. You will be empathetic leader. So you will gain the tools to lead your own venture or innovate within an existing organization. And in the end, today, AI, see, if we go back till 2022 November, तब तक थी ये इकोनॉमी जो थी, इट वाज कॉल्ड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी. इसका मतलब जिसके पास भी नॉलेज थी, दैट नॉलेज दे वर डूइंग, एंड उसी नॉलेज से इकोनॉमी बढ़ रही थी. नए प्रोडक्ट बनाओ, नए टेक्नोलॉजी बनाओ, all these what you saw, the wireless communication grew from 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, and onwards, right now. So इन सब से जो हुआ, the technology convergence जो हुआ, everything happened because of the
That was the knowledge base. अब क्या है कि 19 नवंबर 2022 को they released, the company released चैट जीपीटी। और उसके बाद सब कुछ बदल गया। क्योंकि इसलिए बदल गया कि अब जो जो इंफॉर्मेशन जो है, सारी जो इंफॉर्मेशन है वो सबके पास है। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन आपके पास है। You have capability to have the same information as what I have, or what as the NASA scientists have, or whatever the ISRO scientist has. You have that information. So that means अब जो हो रहा है, अब जो होगा, it will be with that information. How can you create new things? Now you have the information. How will you create new things? How you will create how will you make the life of the fellow citizens better? How would you do that? So now the economy is curiosity and creativity based economy. That's what it is. Curiosity and creativity based economy. And you become a leader in adopting this change. And you have all the right to do it. You have all the tools to do it. So now let's go and identify the unmet need. And I would like you to kind of start thinking about what unmet need you would like to work on. And I would like you to put that in the chat box. And let us get at least one idea from each one of you. If you can do that, that will be awesome. You already have given 7 ideas, and also some of the ideas I've given uh, by Professor Murli Manohar, which are he talked about the he. He talked about the power grid challenge. He talked about the challenge which was given by Indian Navy. He talked about the motor control. So we already have that. So thank you so much, and I'm looking forward to see you in the class.